Okay, so this is an amazing look. It is very simple yet very classy. So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आती है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, so first I'm just going to draw my eyebrows with the help of my Blue Heaven eyebrow pencil. Okay, so then I'm just going to clean the area around my eyebrows. It's not a game, it's a rich thing. फेस आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई माई जॉनसन्स बेबी मिल्क क्रीम। इसकी मदद से मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करूंगी। टू अप्लाई माई इनसाइड प्राइमर, इसको बेसिकली अपने टी जोन पे मैं अप्लाई करूंगी। इसकी इतनी सी क्वांटिटी ही मोर देन इनफ होती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट। Okay, so on my face I'm just going to use my Maybelline Fit Me foundation. This one is my favorite. I'm just going to use it. इसको मैं बहुत कम क्वांटिटी में अपने पूरे फेस पे यूज़ करूँगी, ज़्यादा भर के यूज़ नहीं करना होता है। And then after that I'm just going to apply this LA Pro concealer under my eyelid area. And इसकी मदद से मैं अपने पूरे फेस को हाईलाइट भी करूँगी। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई वांट कि मेरा जो ये एरिया है चीक्स का, ये काफ़ी उभरा हुआ लगे। सो व्हाट आई वांट टू डू इज़ मैं अपने फेस को बहुत अच्छे से कॉन्ट्योर करूँगी। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्ट्योर माई फेस। Palette, I'm just going to pick this shade and apply it as a blusher. Okay, so for my eye makeup I'm just going to pick this shade and apply it on my eyelid area. I'm just going to pick this brown shade and apply it on the center of my eyelid. It's not a game, it's a rich thing. Now with the help of this flat brush, I'm just going to pick this brown shade and apply it on my lower lash line. And then with the help of this small flat brush, I'm just going to pick this champagne shade and इस शेड को मैं अपनी आईज की आईलिड पे अप्लाई करूँगी।
Okay, so then after that first I'm just going to apply this glue eyeliner. इस glue eyeliner को मैं अपनी eyelid पे apply करूँगी. It's not a game, it's a rich thing. So after I apply these false lashes, I'm just going to apply my mascara on my lower lash line. Okay, so at last I'm just going to highlight my face with the help of this highlighter palette. First of all, I'm just going to I'm just going to highlight my cheeks. I'm just going to apply this beautiful orange shade from my lipstick LA18. I'm just going to add a little bit of red in it and just going to smudge it.